Mandsaur district collector gherawed by angry farmers. Angry protesters torch vehicle. As Mandsaur boils over, the centre steps in and takes stock of the situation. Hello and welcome to the news. I'm Kavita Krishnan. Let's take a look at the top headlines at this hour. Triple murder in Sitapur rocks the state of Uttar Pradesh. Is Yogi's UP heading for Gunda Raj? BJP MLA from UP Sriram Sonkar and his supporters assault a traffic constable for doing his job. The traffic cop is thrashed for asking netas to follow lane discipline. Make private discoms pay for power cuts, proposes the Delhi government. The penalties to be adjusted in your electricity bills. Shocking carelessness by Bengaluru's civic body. The Bangalore Electricity Supply Company or BESCOM removes street lights put up by residents only to put them up again after a child gets raped and abandoned in the area. 7 killed and at least 35 reported injured after armed men attacked the Iranian parliament and the Ruhollah Khomeini shrine in Tehran. Farmers' fury peaks in Madhya Pradesh. To bring you up to speed, farmers' protest in Madhya Pradesh rages on with 7 dead and several injured after police allegedly opened fire on the crowd. Farmers in Madhya Pradesh, Ratibad, have also joined in the protest against what they are calling the Mandsaur incident. The farmers have been protesting since the 1st of June for loan waivers and better prices for their produce. After the protest turned violent yesterday, the police and CRPF were called in. Protesters alleged that the police opened fire on the farmers, killing 4. Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan has ordered a judicial probe into the deaths and a compensation of 10 lakh to the kin of the deceased. And Prime Minister Narendra Modi is holding a meeting with senior ministers over the incident. Mohit joins me on the phone line for the latest details. Mohit, situation boiling over in Madhya Pradesh. We understand that after Mandsaur, the protests have spread to Ratibad, to Sihor and to Devas. Well, in fact, as you rightly pointed out, it seems to be spiraling out of control, and the administration seems to have no solution to this problem. The administration, mind you, has caught itself on a typical murky situation with orders coming in from the top leaders asking the police force not to use any kind of force against the farmers, trying to ensure that there are no more casualties reported in the matter. As you rightly pointed out earlier, there have been 7 casualties so far after police opened fire at the protesters yesterday evening in Mandsaur area, and several dozens have been injured. While the exact count of those injured is yet to be released by the government, we've been told that the number could be up to 70. As far as the situation on ground zero is concerned, it seems that more than 3,000 vehicles have been put to flame, and reports of stone pelting has been pouring in from all the neighbouring districts of Mandsaur, including Sarhol and Devas, where a bus which was stationed in the area was stone pelted at, and it was one of the passengers which shot the entire video. So it seems that there is a sporadic violence being reported from the entire in and around the Mandsaur area, and the administration has no solution to it. On the other hand, we have Shivraj Chauhan, who has taken cognizance of this matter, and he has even spoken to the central government, asking them for additional forces to be deployed at Mandsaur district and other areas which continue to boil. As of now, six additional forces of companies have been deployed in and around Mandsaur area by the central government, and it seems the state has requested for 4 more. But given the current scenario, it seems that it is a failure of the administration of the state government in handling this protest, and which has now engulfed almost 1/4 of Madhya Pradesh. Almost 1/4 of Madhya Pradesh on the boil over there. Sporadic incidents of violence. Mohit, stay with us.
There is a curious development in the Mandsaur protest. A video is doing the rounds in which a senior police officer is seen and heard instructing his subordinates that they should use as much force as they want if their commander orders so. Listen in to this video. मध्य प्रदेश में जो आज घटना हुई निंदनीय है और ये एक इतना गंभीर प्रकरण होने के बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान की सरकार और गृह मंत्री कह रहे हैं कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई। तो गोली किसकी लगी? 3 लोग 4 लोग 6 लोग जो मरे हैं, इनके पास तो हथियार थे नहीं, तो आखिर किसने गोली चलाई? अब उन्होंने मजिस्ट्रियल जांच का कहा है। हम मजिस्ट्रियल जांच को हम नहीं मानते क्योंकि वो तो उनका अधिकारी होता है। एडिशनल कलेक्टर क्या जांच करेगा? जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। Mohit, tell us, you said the centre has intervened in the issue. Tell us, what is the state government doing right now? Are they trying to step in? Are they trying to defuse the violence, meet with the farmers? What is the Chief Minister doing? Well, the state government, it seems, is trying to somehow communicate with the agitating farmers, but so far all communication have been declined by the farmers. They say that they will only speak to Shivraj Chauhan. Nothing less than him will do. We had reports of the PWD Minister of Madhya Pradesh and the Agriculture Minister of Madhya Pradesh reaching Mandsaur, but they were stopped before they could reach the district. They were stopped by police forces, saying that this could further aggravate the situation. So it seems that while the state government has finally started some communication to them, and while it took almost 1 week for the state government to reach to this level and actually come out and speak to these farmers, the farmers are now not ready to speak to the state government. They claim that they would only speak to the guy, to Shivraj Chauhan, who had promised them that he would finally waive off all the loans and promised a better price for the produce for the farmers. And that is the given situation from the state government. The state government at the same time has also requested the centre government to take cognizance of this matter and send in more police forces. We've been told that 4 additional companies or forces have been demanded by the state government right now. At the same time, there have been ongoing meetings since morning regarding the same, and we've also been told that Shivraj Chauhan has also spoken to Amit Shah in this matter, because the fact of the matter remains that Madhya Pradesh is largely agrarian, and a farmer issue which is such a huge magnitude can further unfold into something bigger of an issue. So the government is trying its best to ensure and pacify the farmers, but it seems the farmers are in no mood to succumb to the government. They are in no mood to let their demands go. They want to speak, and they want written assurances from Shivraj Chauhan, and they claim that nothing else than that would do. Right. Mohit, also, like you mentioned, Madhya Pradesh is largely an agrarian state. 1/4 of the state, like you pointed out, is seeing violence over there. How is this impacting life across the state? How is this impacting the supply of essential commodities to markets within the state and outside? Well, Mandsaur happens to be on the border area of UP and Rajasthan. So it is a major connectivity route which used to help out in supply of essential commodities. And with the entire highway being closed down due to this agitation, it has not only affected the commodities inflow but also the outflow, which used to go to Uttar Pradesh and Rajasthan. So it's not just one area; it's an entire quarter of the state which has been barred completely, has been cordoned off. Almost 3 to 4 cities are currently under internet. Have their internet connections severed.
So it seems that the complete there are attempts by the state government to isolate this particular area somehow, just to ensure that the violence does not spread more. But at the same time, this has not helped. Over the past 2 days, over the past 24 hours, we've seen, ever since the reports of the farmers being killed was reported, the violence has only grown, and there have been support gathering in from the rest of these villagers, and support has been pouring in for these farmers. They claim that firstly, Shivraj Chauhan should come out and give an apology to these farmers who were killed in this shootout by the police, and on the second, the others demand that there should be an inquiry into the matter as to who actually shot these farmers. Mind you, the district administration has already issued a statement that it wasn't their orders on which the police acted. The police, on the other hand, maintains that it was orders of the administration. So it seems that there is a controversy within the administration as well, and there is a lot of confusion, which has now resulted in this agitation only getting bigger. And the solution, it seems, is nowhere to be seen by the state government. Right. Farmers very clear over there that they will speak to none other than Chief Minister Shivraj Singh Chauhan. But the Congress, meanwhile, has slammed the BJP government and Prime Minister Narendra Modi for their alleged inaction in the Madhya Pradesh farmers' protests. PM is holding a meeting with senior ministers over the Mandsaur incidents. Radha Mohan, Gadkari, Rajnath Singh, among others, present. We want to ask the Prime Minister many questions, but I will limit it to 2 or 3. First is, why has the Prime Minister not yet, 24 hours going on 36 hours, not said a word about the terrible tragedy in Mandsaur? Second, this lot of hoopla and hullabaloo about starting a Kisan TV DD channel. Mr. Prime Minister, did the Kisan DD channel or DD Kisan channel show this Mandsaur incident? क्या सही व्यथा कृषकों की ये डीडी किसान चैनल ने दिखाई थी क्या? आपका चाल, चरित्र, चेहरा आपकी पार्टी का, आपके बाकी सहयोगी संस्थाओं का सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट है. सच्चाई को न दर्पण करना, न दर्शाना, न उसको एड्रेस करके हल करना. हाँ, मीडिया मैनेजमेंट करना. तो मीडिया मैनेजमेंट के लिए इंटरनेट बंद कर दिया, किसान चैनल में दिखाया नहीं कुछ भी. एंड थर्डली, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इन केस यू हैव फॉरगॉटन, there is a small little booklet which you call the BJP manifesto, with a small little page called page 44 of your own BJP manifesto, in case you have forgotten, where you have made a solemn promise that we'll give MSP plus 50% profit. Please see it, it's your manifesto, it's written in black and white. MSP plus 50%, and your same government, shortly after winning the elections on this manifesto, made a statement on an affidavit in the Supreme Court. It is not possible to give this price. Mr. Prime Minister, Mr. BJP, you have forgotten agriculture in your craze for anti-Congress culture. That's the only culture you remember. The NAMO policy apparently stands for NAMO, No Agriculture Malgovernance Only. मंदसौर की घटना अत्यंत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है. मैं दुखी हूं, मन तकलीफ से भरा है. प्रशासन को ये निर्देश सदैव दिए थे कि किसानों के साथ चर्चा करें, बातचीत करें और बहुत सद्भाव के साथ इस आंदोलन में भाग ले रहे किसानों से बात करें. लेकिन असामाजिक तत्व इस आंदोलन में घुस गए. पिछले दिनों से जिस तरह की घटनाएं हो रही थी वो बहुत तकलीफदेह थी, दुर्भाग्यपूर्ण थी. Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan speaking about
the protests across Madhya Pradesh by farmers, protests turning violent and spreading from city to city in the state. Meanwhile, the left party has also jumped into the fray. Has left leader Sitaram Yechuri blamed the Madhya Pradesh government for the unrest in the state. Listen to what he had to say. What are the demands? All the demands are the promises that were made by Prime Minister Modi 3 years ago. He promised a minimum support price of 1.5 times the cost of production. That has not happened. Import duty on agricultural produce has been reduced. In fact, for wheat it has been brought down to 0. Net result, the farmer is not getting enough remuneration and is collapsing under the debt trap. That is leading to farmer suicides increasing. We also spoke to some of the protesters in Mandsaur. Listen to what they had to say. Mandsaur district of Madhya Pradesh is burning. As you can see behind me, this is the condition of the Mandsaur district. Several vehicles have been put on fire right now. Several continue to be on fire. This is one such incident. Over 2 dozen vehicles have been charred completely in this protest, which has been continuing for more than 2 days. The farmers and the policemen are against each other. We are going to speak to some of these villagers from Mandsaur. Sir, ये कब से चल रहा है protest और क्या है डिमांड? ये सर एक तारीख से शुरू हुआ था। तो अभी क्या डिमांड है आप लोगों की? अभी डिमांड भी सरकार ने कुछ, अभी तक तो कोई सरकार ने सुनवाई नहीं हुई अभी तक तो नहीं की। इसके बावजूद यहाँ सबसे अधिक जो भी है यहाँ का मलारगढ़ विधानसभा का विधायक है जगदीश देवड़ा, उसकी कारागरी है सभी। नहीं तो अभी कहा जा रहा है कि फार्मर्स को चाहिए था कि उनका लोन माफ कर दिया जाए, जो कि कहा जा रहा था मध्य प्रदेश सरकार से, लेकिन अभी तक करा नहीं करा। लोन माफ नहीं सर, किसान जो फसल बेचने जाता है उसको पैसा उसको तुरंत नहीं मिलता, 10 रोज बाद पैसे मिलता है। जो बीमार है और बीमार किसी के घर में किसी के शादी है ब्याह हो तो पैसे 15 रोज बाद आते हैं। कोई 5000 भी है तो 5000 नगद नहीं मिल रही है। कहाँ से पैसा लेके मंडी में पैसे लेके नगद जाओ, वहाँ पे जाओ बैंक वाले 15 रोज से परेशान करते हैं, 15 दिन से क्लियर नहीं करते। अगर ये कल धरना था ये किसान भी नहीं मरते अगर यहाँ का मौजूदा विधायक जगदीश देवड़ा आकर बोल देता मेरी तरफ से मैं कल या परसों रोज आपको कुछ भी आश्वासन देकर चला जाता हूँ। वो सबसे करागा जितने भी मौतें हुए सभी जगदीश देवड़ा की वजह से। ये अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, 2 दिन से लगातार वायलेंट हो गया है, काफी सारे व्हीकल्स को आग लगा दी गई है। अभी आप लोगों को क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये है सर, हमारे यहाँ किसान लोगों की मौत हो गई है, पुलिस वाले कबूल नहीं कर रहे हैं कि हमने गोली मारी है। पुलिस वाले कह रहे हैं अभी तक कबूल करने की तैयार नहीं, इसलिए आंदोलन और ज्यादा बढ़ रहा है। कहीं से सीआरपीएफ के जवान की एक टोली गाड़ियों की इधर आ रही थी, उन्होंने ये माजरा देखा तो उन्होंने कुछ समझौता करना चाहा, किसानों को समझाना चाहा, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अडिग रहे और उनका कहना था कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम शांतिपूर्ण ढंग से इस तरह हाईवे जाम करते रहेंगे। इस बीच छोटी मोटी कहासुनी भी हुई जवान किसान के बीच और जवानों ने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, किसान आक्रोशित हो गए और स्थिति बिगड़ती देख सीआरपीएफ के जवानों ने गोली भी चलाई, हवा में फायर किए और इसी कारण कुछ किसानों को भाग दौड़ में गोली भी लग गई। सर, किसान अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ पर, तो किसान एकत्रित हुए थे और पुलिस ने उसको हटाने की कोशिश करी, पथराव किया, फिर किसानों को बुलाया कि हम कुछ नहीं करेंगे और किसान पास में आए। जैसे ही वो सीआरपीएफ वालों ने गोली चलाई यहाँ से, उसमें 4 किसान मारे गए सर यहीं पर मौके पर ही, और 2 पीपलिया थाने वाले पुलिस ने चलाई सर। उनको बुलाया और उनको धोखाधड़ी करी सब उनके साथ। मांग सर ये कि किसान आंदोलन है, इसमें किसानों को फसलों के दाम सही मिल नहीं रहे, इसलिए सरकार से मांग है कि हमारी फसलों के दाम बढ़ाया जाए। तो इसमें 1 जून से किसानों ने हड़ताल करी थी, सब्जी दूध मार्केट नहीं जा रही थी, तो पिपलिया मंडी के कुछ बनियों ने दुकानें जबरदस्ती से खोली, तो किसान उनको समझाने गए तो उनके ऊपर पिपलिया मंडी टीआई अनिल सिंह ठाकुर ने जबरदस्ती पत्थरबाजी करवा के ये जो आंदोलन है उसकी वजह से हुआ है, अनिल सिंह ठाकुर की वजह से, और ये जो आग जनी सब हुई और कल कुछ जवानों ने हमारे किसान भाइयों के 6 के गोली मार दी और वो 6 के 6 शहीद हो गए। ठीक है, और किसान ये जो भूपेंद्र सिंह जी गृह मंत्री बोल रहे हैं कि ये किसान ये कांग्रेस करवा रही है, ये कांग्रेस नहीं कर रही है, बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, सारे किसान लोग हैं और किसानों को इनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें बीजेपी कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। And as farmers' anger continues to pour on the streets across India, we continue our debating focus on the ongoing agrarian crisis.
unmissable tonight at 9 p.m. with Faye D'Souza. Do our politicians think that they are above the law? BJP MLA Sriram Sonkar and his supporters abused a traffic policeman near the Vidhan Sabha, all because he asked the MLA to drive on the right side of the road. The entire incident is caught on camera and you can clearly see that the MLA is driving on the wrong side of the road and then defiantly abusing the traffic cop who pulled him up. Sonkar's aides abused and slapped the policeman even as the honest constable tried to reason with him. मेट्रो प्रभारी हूँ मैं, तो इधर मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लोक भवन में चल रहा है, कंजेशन न हो इसलिए मैं राउंड पे था। इधर जाते समय देखा तो विधायक निवास से जो विधायक जी थे अपने आप को बताया, उन्होंने श्री राम नाम है, मऊ की विधायक है भाजपा के। एक गाड़ी थी काली फिल्म लगी हुई, हूटर लगाई हुई, उल्टी दिशा से आगे पूरा रोड ब्लॉक करी थी। मैं उतर के गया और विधायक से अनुरोध किया कि सर ये वन वे है, वन वे का पालन करें, आगे से घूम के आए। बोले तुम लोगों ने मेट्रो को बना करके खोद रखा है, नरक मचा रखा है, और 300 मीटर चलने के लिए मैं 3 किलोमीटर जाऊंगा। सर आप ही की व्यवस्था है, आप ही मेट्रो बना रहे हो, हम तो अनुपालन करा रहे हैं। लड़के जो हमारे साथ थे, जैसा कि आदेश है कि जो भी कार्रवाई हो, घटना हो, तो अपनी पारदर्शिता के लिए हम लोग रिकॉर्डिंग रखे। मैंने भी रिकॉर्डिंग कर रहा था, लगा रखा था बॉडी वन कैमरा, और लड़के मोबाइल से कर रहे थे जो हमारे हमराई थे। उसमें से एक गन लिया हुआ था, राइफल, आदमी निकल के आया और उसके मोबाइल छीन लिया, गाली गलौज करने लगा। तो ये हुआ गाली क्यों दे रहे हो आपस में। मैंने होमगार्ड को डांटा, तुम दूर रहो। मैंने कहा आप कायदे से बात करिए, गाली मत करिए। तब तक निकल के थप्पड़ मार दिया। मेट्रो से साहब के साथ जा रहा था मैं चारबाग, तो देखा मेट्रो के कुछ गार्डों ने बताया कि एक विधायक जी हैं, वो उल्टा जो है रोज आते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। तो साहब से बताया कि इनको सर समझाइए, इधर से ना आया करें। साहब वही समझाने लगे कि आप उल्टा आ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, आप क्या पब्लिक को संदेश दे रहे हैं। अब आप ही ऐसा करेंगे तो क्या जो है आप जो है अपनी वो करेंगे। तब तक जो है हम लोग जो है कैमरा अपना मोबाइल निकाल के बना रहे थे कि रॉन्ग साइड आ रहे हैं, ये चीज़ एक दर्श अधिकारियों को बता सकें कि भाई देखिए गलत कर रहे हैं। तब तक जो है उनके 2-4 लड़के जो है उनके गुर्गे जिनके साथ में बैठे थे, वो गाली गलौज करते माँ बहन की, और चले आए बाहर और कहने लगे वीडियो कैसे बना रहे हो, ये है वो है। तो हम लोगों ने रोकने का प्रयास किया कि भाई आप जो है ये गाली गलौज क्यों दे रहे हैं, आपके मुँह से ये ठीक नहीं है, समझे। तब तक वो एक उसमें से एक लड़का था, उसने एकदम से हाथ छोड़ दिया। तो हम लोगों ने उसको रोका, तो और लोगों ने जो साहब ने रोका और भी जब गार्डों ने रोका, तो वो एकदम 2-3 और भी जुट गए, उसमें घूंसे इलाज चलाने लगे। विधायक थे मऊ के, ये उल्टा चल रहे थे यहाँ रॉयल होटल से, जिससे ट्रैफिक बाधित हो रहा था। उसको क्लियरेंस के लिए जो सब इंस्पेक्टर है मेट्रो प्रभारी TSI प्रेम शंकर साई अपने आदमियों के साथ, सिपाहियों के साथ उनको रोक रहे थे। उस रोकने में इनकी नोकझोंक हुई और हाथापाई की गई, जो कि एक बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनके लिए ये अच्छा नहीं लगता। जो हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे को इसकी जानकारी नहीं है, आपके माध्यम से तो एक वर्जन मिल रहा है, मगर कहीं ऐसा है तो मैं इतना ही कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी इन चीजों के लिए हम लोग को समय समय पे अवगत करवा चुके हैं, और उन्होंने कहा भी है कि जब हम सार्वजनिक जीवन में हम लोग रहते हैं और प्रतिनिधि के रूप में हमारा व्यवहार वो सरल होना चाहिए और उसके अंदर नम्रता होनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो कभी कोई चीज करेगा, कहीं इसमें जो आप जो बता रहे हैं उसमें सच्चाई है, तो इसकी निंदा ही हो सकती है, और जो भी पार्टी के लेवल में जो भी कुछ बातचीत करनी है वो अवश्य की जाएगी। Staying with Uttar Pradesh, a trader was shot dead along with his wife and son right outside their own house in UP Sitapur district late on Tuesday. The whole incident captured on CCTV camera. Now, according to the police, the unidentified bike-borne assailants fled the scene after murdering and robbing the victims. Another resident from their locality tried to intervene. He too was shot but survived and called the police. The police reached the house immediately, but no arrests have been made so far.
Listen to what Uttar Pradesh Minister Shrikant Sharma had to say about the incident. सभी कप्तानों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में कानून व्यवस्था को चुस्त रखें, अपराधियों को चिन्हित करें और कठोर कार्रवाई अपराधियों को करें, पेट्रोलिंग बढ़ाएं और जो अपराधी जहां जहां छुपे हैं और जिन अपराधियों पर इनाम घोषित है और जो अपराधी फरार हैं, ऐसे अपराधियों को चिन्हित करके अविलंब सलाखों के पीछे डाला जाए। आदित्यनाथ योगी सरकार की प्राथमिकता है कि अपराध पर अंकुश लगे और निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी इस पर अंकुश लगाने में सफल होंगे। That is a wrap on the news. Do stay tuned to Mirror now for more updates.